Hello beauties, how's you all? This is Palvikanda and welcome back to my channel. So in today's video I'll show you how you can create this cat eye dramatic look. So keep watching, keep learning. Prep your skin is the main part in makeup. So first step is cleanse your face with the facial wipes. You can use any type of facial wipes. If you have sensitive skin you can use baby wipes. I used a baby wipes because I have a sensitive skin. So you just have to clean your face nicely. After cleansing, you just have to wait for 2 minutes, let it get dry, and afterward you have to apply a toner. This is the second step of makeup, that is called a CTM. I use rose water as a mist. So let it get dry, wait for around 1 to 2 minutes. After that we have to do a moisturizing, that is the main and important part of CTM. So firstly we have to do our eye makeup, that is I highlight my eyelids with the white concealer. Set it with the white eyeshadow palette because white concealer make it your eyeshadows pop up. Whenever you set your concealer, make sure pack it up with eyeshadow powder. It makes your eyeshadow's color more pigmented. That's a pro tip. Dust it off your excess eyeshadow powder. Blend it nicely and gently. Blending is the key in makeup. For creating more depth in my eye makeup, I'm going with a light to dark. When you feel like you have taken too much powder on the brush, rub it on your hands before applying them. Pick the pink eyeshadow on the outer lids of the eye. Whenever you do cut crease, make sure pick light color concealer. I'll pick a darker one because I use a pressed glitter, so वो थोड़े ड्राई थे तो इसलिए ना मैंने कट क्रीज बनाने के लिए नहीं करना था, मुझे स्टिक करना था, तो इसलिए I picked this one. But I'll tell you that please make sure because आपके जो हाईलाइट्स है, मतलब जो ग्लिटर्स है, वो पॉप अप होने चाहिए आपके कलर्स. सो इसलिए हमें हमेशा अपने आईज पे उसको पॉप अप करने के लिए हमें लाइट कलर कंसीलर यूज़ करना चाहिए. That's a pro tip. Set your concealer with eyeshadow powder so that your concealer don't mix it with any kind of eyeshadow. So wish me luck because it's my first time that I'm doing that kind of eye makeup. I was not happy at first because I was like, something is missing. When I select green glitters to complete the eye makeup, after applying on the eyes, I was like, wow, it changed the whole look, and I was super happy because जब मैंने वो रेड वाले शिमर्स लगाए थे ना ग्लिटर्स, तो ना मैंने कैमरा ऑफ करके ना मैं नीचे बैठ कर लगता अब मैं क्या करूँ. मैं सोचती हूँ, मैंने सारे कलर अपने मिक्स करने लगी दैट मुझे था मैं गिव अप नहीं करना चाहूँगी. सो मैंने क्या किया, मैंने सडनली मैंने ग्रीन लगाती हूँ. और मेरे दिमाग में कि ओ जी जिस कलर का आउटफिट डाला है उस कलर की मैंने क्यों नहीं लगाई. आफ्टर दैट आई रियलाइज माई मिस्टेक. You learn from your experience. Mistakes practice makes a man perfect.
checking that is it really works on intense dark circles. Let's see what's coming out. ब्लेंड योर कंसीलर विथ ब्यूटी ब्लेंडर बट जेंटली, बिकॉज हमें ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, बिकॉज ये फाउंडेशन है, कंसीलर नहीं, तो हम ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो वो कंसीलर लगाने का फ़ायदा क्या होगा। Actually the result was amazing. I'm totally impressed by the Swiss Beauty concealer. It works under my eyes really well and मुझे एक स्ट्रोक ही लगाना पड़ा, इसकी पिगमेंट काफ़ी है, सो मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने काफ़ी रिकमेंडेशन देखी थी, मैंने काफ़ी सर्च की थी इसके बारे में, मुझे लगा नहीं था कि दैट इट रियली वर्क्स अंडर माई आइज बिकॉज आई हैव इंटेंस डार्क सर्कल्स। आई वाज लाइक नहीं हो पाएगा, बट इट रियली वर्क्स वेरी वेल। सो यू कैन सेट योर कंसीलर विद कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। और आप इसको अपनी सेटिंग स्प्रे से भी सेट कर सकते हो। टू मेक योर लिप्स लुक पाउटी एंड प्लमी, सो आपको क्या करना है, आपने लिप लाइनर लेना है। लिप लाइन, इफ़ यू डोंट हैव एनी लिप लाइन, यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ लिपस्टिक एज आउटर लाइन लगाने के लिए। आपको जो ब्रश होता है लिप लाइन लगाने के लिए वो लेना है, उसको आउटलाइन करना है अच्छे से। सो यू कैन आफ्टर दैट यू कैन फिल इट विथ एनी, जो भी आप लिपस्टिक यूज़ करते हो वो जो आपको कलर पसंद है वो लगाइए सेंटर में। इट रियली मेक्स योर लिप्स plump and pouty. The final look. Hope you really like the makeup tutorial. It's really simple but elegant at the same time.